तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस नई वीडियो में। तो कैसी चल रही है तैयारी दोस्तों? कल से आपके एग्जाम्स भी शुरू हैं जी, सीएमए इंटर ग्रुप 1 और सीएमए फाइनल ग्रुप 3 के। अच्छे से करना तैयारी और अच्छे से एमसीक्यूज कर ले जाना, क्योंकि एमसीक्यू ही आपको पास कराने वाले हैं। कम से कम आपके 30 में से 20 मार्क्स तो एमसीक्यूज में बनने चाहिए। तो इसीलिए मैं आज लेकर आ गया हूँ जी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट की एक ऐसी बेस्ट एमसीक्यू सीरीज, जिससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला। आपको इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना होगा, क्योंकि इसमें से ही एमसीक्यूज कुछ आपको वहां पेपर में देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए जी शुरू करते हैं जी, आपका इतना टाइम नहीं खराब कर सकते। तो चलिए जी, फर्स्ट क्वेश्चन है जी, इफ अ कंपनी रिवाइजेस इट्स कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, द चेंज मस्ट बी डिस्क्लोज्ड अंडर विच रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट जी? ऑप्शन नंबर आंसर है जी ऑप्शन नंबर बी, कॉस्ट ऑडिट एनेक्सर compliance। अगला क्वेश्चन है जी, व्हेन अ प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर्ड पार्टली इन हाउस एंड पार्टली थ्रू सबकॉन्ट्रैक्टिंग, which cost must be excluded from cost audit valuation? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सब कॉन्ट्रैक्टर abnormal idle time। अगला क्वेश्चन है जी, which CAS ensures that penalty and liquidated damages cannot be included in cost records? तो इसका आंसर है जी ऑप्शन नंबर डी, CAS 24। अगला क्वेश्चन है जी, the cost auditor's obligation to comment on internal control over energy consumption arises under which annexer? तो इसका आंसर है जी ऑप्शन नंबर सी, A6। अगला क्वेश्चन है जी, फॉर कैप्टिव कंजप्शन वैल्यूएशन अंडर CAS4 विच ऑफ द फ्लोइंग इज स्ट्रिक्टली एक्सक्लूडेड? इसका आंसर है जी, रिसर्च कॉस्ट रिलेटेड टू प्रोडक्शन, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है जी, विच रिकॉर्ड इज एसेंशियल टू वेरीफाई करेक्टनेस ऑफ नॉर्मल वर्सेस अबनॉर्मल लॉस इन कंटिन्यूअस प्रोसेस इंडस्ट्रीज? तो इसका आंसर है जी ऑप्शन नंबर ए, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन शीट। अगला क्वेश्चन है जी, इन XBRL रिपोर्टिंग फॉर कॉस्ट ऑडिट पेरेंटल पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप रेफर्स टू? ऑप्शन नंबर सी, टैक्सोनॉमी स्ट्रक्चर लिंक। अगला क्वेश्चन है जी, विच आइटम शैल बी मैंडेटरी reported in para 2 of CARA3? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रिकंसिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स। अगला क्वेश्चन है जी, प्रोडक्ट कॉस्ट इंक्रीजेस ड्यू टू अंडर अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स caused only by low capacity utilization, this must be classified as ऑप्शन नंबर सी, idle capacity cost। अगला क्वेश्चन है जी, which audit technique is best for verifying fairness of cost allocation keys? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, reasonableness test। अगला क्वेश्चन है जी, अंडर कंपनीज एक्ट द cost auditor must forward CRA4 to the central government within 30 days of submission to the board, ऑप्शन नंबर सी आंसर है जी। अगला क्वेश्चन है जी, CAS cost accounting standard 6 deals with the which type of cost? Overheads, ऑप्शन नंबर सी। which record is essential to verify inter unit transfer pricing? ऑप्शन नंबर बी, CS for valuation file। अगला क्वेश्चन है, when a company uses multiple fuels interchangeably, which audit document validates equivalent energy conversion? ऑप्शन नंबर बी, heat value matrix। अगला क्वेश्चन है, इन कॉस्ट ऑडिट रिडक्शन ऑफ कॉस्ट इन्फ्लेशन थ्रू ओवर प्रोविजनिंग कैन बी कैच थ्रू? तो इसका आंसर है जी ऑप्शन नंबर डी, क्वांटिटेटिव रिकॉन्सिलेशन। अगला क्वेश्चन है जी, प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस इन कॉस्ट ऑडिट इज ड्राइव्ड फ्रॉम? ऑप्शन नंबर डी, एनेक्सर 6 एनेक्सर सी। अगला क्वेश्चन है जी, CS8 इज कंसर्न्ड विद? तो इसका आंसर है जी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। अगला क्वेश्चन है, विच आइटम इज कंसीडर्ड abnormal एंड एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्ट रिकॉर्ड्स? स्ट्राइक वेजेस, ऑप्शन नंबर सी। विच मेथड इज यूज्ड टू वैलिडेट करेक्टनेस ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कैलकुलेशन? तो इसका आंसर है जी, फ्लो रिकंसिलेशन, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है जी, विच कैज CS prescribes treatment of pollution control cost? CS14, option number A। Which audit evidence is best for verifying correct application of absorption rates? Option number C, cost allocation sheet। CAS3 refers to cost of utilities, option number B। Which industry requires special cost audit focus on by product realization? Option number C, steel। अगला क्वेश्चन है जी, which of these must the cost auditor mandatorily comment on under SCARO linkage? is the answer is option number D, cost control system adequacy। अगला क्वेश्चन है जी, CAS2 is related to of capacity determination। अगला क्वेश्चन है जी, which when a company follows dual costing, financial plus cost, which discrepancy is most likely to arise due to valuation differences? Stock valuation divergence, option number B। Which auditing utilities which evidence confirms correct classification between captive and purchased power? ऑप्शन नंबर सी, metered consumption sheet। अगला क्वेश्चन है जी, CS11 provides guidelines for which type of cost? ऑप्शन नंबर डी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। अगला क्वेश्चन है, विच ऑडिट डॉक्यूमेंट ensures that interprocess profits are eliminated from internal transfers? ऑप्शन नंबर डी, unrealized profit elimination file। which when verifying scrap value realization, the cost auditor gives more weight to? ऑप्शन नंबर बी, स्क्रैप यार्ड रजिस्टर। अगला क्वेश्चन है जी, CS12 डील्स प्राइमरली विद? ऑप्शन नंबर ए, पैकिंग मटेरियल कॉस्ट। अगला क्वेश्चन है जी, टू वेरीफाई करेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट, द ऑडिटर मस्ट एग्जामिन payroll abstraction sheet? Option number C। In process industries, equivalent production must exclude abnormal loss units. Option number C। CS9 covers expenses related to
selling and distribution overhead. Which of the following is mandatorily included in the cost of production under CAS 4? Is the answer is option number B, quality control cost. अगला क्वेश्चन है जी, which annexer is cost audit deals with the quantitative of information of production? Is the answer is annexer A, option number A. Under CRA 1, stock valuation must always be based on option number C, cost accounting standards. अगला क्वेश्चन है जी, if the company intentionally defers maintenance to manipulate overhead absorption, the auditor should classify this as option number D, misstated overhead. अगला क्वेश्चन है जी, which audit technique is best suited to detect concealed idle time? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शिफ्ट रिकॉन्सिलेशन. अगला क्वेश्चन है जी, CAS 22 रिलेट्स टू ऑप्शन नंबर सी, रॉयल्टी एंड टेक्नोलॉजी टेक्निकल नो हाउ. अगला क्वेश्चन है जी, अंडर CRA 3 द ऑडिटर मस्ट कमेंट ऑन प्रोडक्टिविटी ओनली व्हेन. तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कंपनी हैज डिफाइंड स्टैंडर्ड्स. अगला क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स मस्ट बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ सेल? ऑप्शन नंबर सी, abnormal वेस्टेज. अगला क्वेश्चन है जी, विच टूल इज मोस्ट यूजफुल टू डिटेक्ट कॉस्ट शिफ्टिंग बिटवीन प्रोडक्ट्स टू मैनिपुलेट प्रॉफिटेबिलिटी? ऑप्शन नंबर बी, क्रॉस सब्सिडी टेस्ट. अगला क्वेश्चन है जी, रिकॉन्सिलेशन बिटवीन कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स इज रिक्वायर्ड अंडर CRA 3. अगला क्वेश्चन है जी, टू इंश्योर करेक्ट कॉस्ट ड्राइवर सिलेक्शन द कॉस्ट ऑडिटर एनालिसिस. ऑप्शन नंबर बी, द रिक्वायर कंजप्शन रिलेशनशिप. Which CAS defines the treatment of depreciation for cost purposes? Option number B, CS 16. When materials are jointly requisitioned for multiple jobs, allocation should be based on. तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टेक्निकल assessed usage. अगला क्वेश्चन है जी, which audit report section requires the auditor to comment on indirect tax incidents? तो इसका आंसर है जी ऑप्शन नंबर सी, पैरा 3 ऑफ CRA 3. अगला क्वेश्चन है जी, इन इंडस्ट्रीज विद मल्टीपल ग्रेड्स ऑफ द सेम प्रोडक्ट कॉस्ट ऑडिटर मस्ट चेक ग्रेड डिफरेंशिएशन यूजिंग. तो इसका आंसर है जी, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन शीट. अगला क्वेश्चन है जी, CAS 7 प्रोवाइड्स गाइडेंस ऑन एम्प्लॉय कॉस्ट. अंडर CRA 3 द कॉस्ट ऑडिटर must mandatorily report capacity utilization based on practical capacity. अगला क्वेश्चन है जी, which CAS prohibits inclusion of imputed cost in cost statement? ऑप्शन नंबर ए, CAS 1. अगला क्वेश्चन है जी, इन कॉस्ट ऑडिट टेक्निकल इंटेंसिफाई एनालिसिस इज यूज टू वैल्यूएट. तो इस आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कॉस्ट स्ट्रक्चर रिजिडिटी. अगला क्वेश्चन है जी, रिगिडिटी. रॉयल्टी फॉर टेक्निकल नाउ हाउ मस्ट बी ट्रीटेड एज पर. ऑप्शन नंबर बी, CAS 22. अगला क्वेश्चन इज, विच डॉक्यूमेंट वेरीफाइज द करेक्टनेस ऑफ अपॉर्शनिंग स्टैंड बाय एनर्जी कॉस्ट इन यूटिलिटीज? ऑप्शन नंबर सी, डिमांड चार्ज एलोकेशन रजिस्टर. अगला क्वेश्चन है जी, CAS 5 रिलेट्स टू ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉर्मल आइटम? टी ब्रेक. To check product wise standard cost correctness, the cost auditor analyzes bill of material. CS 13 relates to overburden removal. Cost distortion due to cross subsidies is directed through option number Z, internal comparison of margin. Management audit evaluates whether managerial action aligns with which core organization dimension, strategic intent. Management reporting system become infactly primarily when information fails the test of the which key attribute. Option number B, relevance. Which audit function critically examines whether functional managers are fulfilling delegated responsibilities effectively? Option number B, responsibility center audit. Corporate image audit consider which element the strongest indicator of long-term organizational credibility, stakeholder trust. Information system security audit, which risk primarily rises due to weak logical access controls. Option will be data manipulation. Internal audit ensures the effectiveness of controls through which measure process. Option will be continuous monitoring. Internal control system evaluation primarily focuses on the relationship between control design and which factor. Option number B, risk exposure. अगला क्वेश्चन है जी, ऑपरेशन ऑडिट मेनली टेस्ट वेदर ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस अचीव which 3E objective. तो इसका आंसर है जी, एफिशिएंसी, इकोनॉमिक एंड इफेक्टिवनेस. अगला है जी, ऑपरेशन ऑडिट आइडेंटिफाइज हिडन इनएफिशिएंसीज यूजिंग व्हिच एनालिटिकल अप्रोच. तो इसका आंसर है जी ऑप्शन नंबर बी, प्रोसेस फ्लो इन फॉर एग्जामिनेशन. अगला क्वेश्चन है जी, ऑडिट ऑफ सर्विस organization primarily examines quality of which dimension? Option number A, process time, responsiveness. Which management audit is HR function examines whether manpower planning aligns with which organization expectation? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, strategic competence requirement. A major deficiency in management communication system is detected when which indicator appears? Option number B, repeated decision delays. अगला क्वेश्चन है जी, इन कॉर्पोरेट इमेज ऑडिट लार्ज डेविएशन बिटवीन इंटरनल परफॉर्मेंस एंड एक्सटर्नल perception suggest existence of which gap? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, कम्युनिकेशन गैप.
अगला क्वेश्चन है जी, इन्फॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी ऑडिट टेस्ट डिजास्टर रिकवरी अंडर विच कोर कंप्लायंस पैरामीटर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आरटीओ एंड आरपीओ रेडीनेस। इंटरनल कंट्रोल ओवर प्रोक्योरमेंट इंश्योर्स विच रिस्क इज मिनिमाइज्ड। ऑप्शन नंबर बी, डुप्लीकेट वेंडर पेमेंट्स। अगला क्वेश्चन है जी, इंटरनल ऑडिट फाइंडिंग becomes ineffective when which factor is missing। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रूट कॉज एनालिसिस। अगला क्वेश्चन है जी, ऑपरेशनल ऑडिट अचीव्स प्रोसेस इंप्रूवमेंट बाय कंपेयरिंग एक्चुअल वर्कफ्लो विद विच बेंचमार्क। आंसर है जी ऑप्शन नंबर बी, आइडियल मॉडल प्रोसेस। अगला क्वेश्चन है जी, फोरेंसिक ऑडिट प्राइमरली रिलाइज ऑन विच इन्वेस्टिगेट मेथड फॉर डिटेक्टिंग कंसील्ड फ्रॉड। तो इसका आंसर है जी ऑप्शन नंबर बी, ट्रेल ऑफ ट्रांजेक्शन। अगला क्वेश्चन है जी, एएमएल कंप्लायंस रिक्वायर्स रिपोर्टिंग टू एफआईयू आईएनडी व्हेन विच टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन इज डिटेक्टेड। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सस्पिशियस कैश मूवमेंट। Under PMLA, proceeds of crime refers to property derived from which activity? Option number B, scheduled offenses. Offenses. Management audit examines whether delegation of authority ensures which essential managerial outcome, accountability in decisions. Option number B. अगला है जी, a major weakness in management reporting arises when reports lack which key characteristic। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक्शन ओरिएंटेड इनसाइट्स। अगला क्वेश्चन है जी, कॉर्पोरेट इमेज ऑडिट प्राइमरली इवेल्युएट्स द कंसिस्टेंसी between performance reality and which organization element। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मार्केट क्लेम्स। अगला क्वेश्चन है जी, इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी ऑडिट कंसीडर्स पासवर्ड डिसिप्लिन अ पार्ट ऑफ विच सिक्योरिटी पैरामीटर, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है जी, इंटरनल ऑडिट इंश्योर्स ऑपरेशन डिसिप्लिन थ्रू विच प्राइमरी एक्टिविटी, आइडेंटिफाई कंट्रोल फेलियर्स। अगला क्वेश्चन है जी, इंटरनल कंट्रोल फ्रेमवर्क becomes ineffective when which element is weak। ऑप्शन नंबर ए, मैनेजमेंट ओवरराइड। अगला क्वेश्चन है जी, ऑपरेशनल ऑडिट सीक्स टू आइडेंटिफाई वेदर रिसोर्सेज आर यूटिलाइज्ड विद ऑप्टिमल एडहेरेंस टू विच प्रिंसिपल। तो इस आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इकोनॉमी ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेशनल ऑडिट रिवेल सिस्टमैटिक इनएफिशिएंसीज बाय एनालाइजिंग विद विच क्रिटिकल डायमेंशन। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वर्कफ्लो वर्सेस एक्सपेक्टेड आउटपुट। अगला क्वेश्चन है जी, ऑडिट ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन हैवीली डिपेंड ऑन असेसिंग विच परफॉर्मेंस फैक्टर। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंडेक्स। Management audit in marketing evaluates whether promotional decisions align with which key parameter or target customer segment. Uh, persistent gap between planned and actual MIS output indicates failure in which area? Information processing. Option number B. Corporate image audit considers sudden negative sentiments in markets as an indicator of deficiency in which area? Option number B. Public relation management. अगला क्वेश्चन है जी, इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी ऑडिट टेस्ट विद फैचर backups are consistent with the which requirement? Option number B, recovery point objective. Internal control over sales ensures prevention of revenue leakage through which measure or segregation of duty? Option number A, internal audit reports becomes ineffective when which essential component is missing? तो इस आंसर है जी, follow up action tracking। अगला क्वेश्चन है जी, ऑपरेशनल ऑडिट रिवेल्स परफॉर्मेंस गैप्स बाय मेजरिंग actual efficiency against which standard। तो इस आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंडस्ट्री established norms। अगला क्वेश्चन है जी, forensic audit often detects laundering by identify unusual pattern in which element? जी ऑप्शन नंबर बी, fund flow trail। अगला क्वेश्चन है जी, suspicious transaction between AML rules are reported primarily due to deviation from which behavioral benchmark। तो इस आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक्सपेक्टेड ट्रांजेक्शन पैटर्न। तो सभी के आंसर बी ही लग रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन है जी, पीएमएलए अलाउज प्रोविजनल अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी फॉर प्रिवेंटिंग द विच रिस्क। तो इस आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एलाइनेशन ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। लास्ट वन इज forensic audit integrates digital analysis mainly for detecting which type of manipulates। तो ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन फ्रंट। तो इसी के साथ हमारी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट की है रैपिड 100 एमसीक्यू सीरीज यहीं पर खत्म होती है जी। तो अच्छे से कर लेना, इस वीडियो को जरूर देख लेना, पूरा देख लेना। अगर पीडीएफ चाहिए तो नीचे कमेंट जरूर कर देना कि पीडीएफ। इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू जी, बाय।